So hi everyone, this is second episode of the podcast series Honest podcast. of the Honest podcast series, and this is my tarot reader, astrologer slash sister Asta Kant, also known by Manifestential Tarot. Yeah, my channel is known by Manifestential. Cool. And whew, this is like first time. Okay, so I record YouTube videos, I make YouTube videos, and I do these reading on YouTube. I go by the channel Manifest and Chill, both on YouTube and Instagram. And I have done this before. I have recorded a video before, but right now I'm trying to get into the groove of being able to say things. Astha Kant is mera naam hai, और Manifest and Chill is a tarot channel, and I do personal readings. And for past 2 years, I have been giving out personal readings to people, and some of them are very successful. So one thing I wanted to add that even though she does not have the social presence that one might think with the knowledge that uh, she has extremely good knowledge, and whatever I have learned, as I mentioned in my last video as well, that I have many individuals in my life through which I have learned various things, and but I'm not able to share the same with others. So this is my attempt at that, second attempt at that. So I want you to listen to her because she has extreme knowledge, and because I am a first hand, I have experienced it firsthand. I have seen her learning through all the years. It's been what, 10, 11 years that she's been into it. Yeah, So I got my now first deck in 2015. that's So crazy, 10, almost 10 years now. एंड सिंस लाइक उससे पहले भी मैं टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड थी, और जो इसने कहा नॉलेज, मैंने आई एम नॉट अ सोशल मीडिया पर्सन. मैं अपने आप को अगर डिस्क्राइब करूं, मेरा हमेशा से अटेम्प्ट रहता है कि मैं क्या कहते हैं, इम्बाइब करूं मोर नॉलेज एक्सपीरियंस, पर ना वो सब यहाँ पे है. इट्स इन माई हार्ट. इट्स लाइक वो इतना ज्यादा फ्लोर पे नहीं, इतना. लेकिन रीडिंग्स के थ्रू क्या होता है कि मैं खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दे रही, मैं खुद को आई एम एबल टू turn the tables and give this third person, fourth person perspective, channel messages for the person who's sitting in right front of me. That to me gives maximum satisfaction. Like as a reader, and the person feels seen, they feel Yeah. attended to the parts which maybe they were not even aware about sometimes. So that's how a reading like opens a space in you, that जरूरी नहीं कि आप स्टक हो, जरूरी नहीं है कि आप स्ट्रगल कर रहे हो आंसर ढूंढने के लिए, पर कभी कभी हमको एक ऐसा स्पेस, एक हम सब जो है इस धरती पर रहते हैं, हम 3D में हम लोग ना ऐसे एक्सप्लोर करते रहते हैं. वी आर लाइक स्विमिंग, की कोई चीज सामने आ जाएगी, कोई चीज सामने आ जाएगी, भवसागर कहते हैं ना इसको. तो हम वो करते रहते हैं, एक्सप्लोरेशन करते रहते हैं, लेकिन रीडिंग ना आपको एक अलग स्पेस में ले जाती है. वो That I also feel as receiver. towards as a receiver, as उसके दूसरे end पे वो as a receiver you feel that you are in a different space. And इसलिए मेरे पे tarot reading, मेरे पे मतलब क्योंकि I keep sharing her videos on my social media, तो मेरे पे questions आते रहते हैं that how does tarot reading help, और ज़रूरी है क्या करना, और सच होता है नहीं होता. तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. तो इसलिए दिस वीडियो, अब हम उस पॉइंट पे आ रहे हैं कि ये तब बन रही है that there are like 8 very common questions around tarot reading. So I wanted to address those with the tarot reader itself. So we can start with those. ओके, Also आपको स्टार्ट करने से पहले पानी पी लो. हाँ, और आपको इस साइड बैठना है क्या? क्योंकि मुझे लग रहा है आप हो गेस्ट. अब देखो, सेंस में नहीं रहा आपको, ऐसा लग रहा है मैं गेस्ट हूँ, यू आर द गेस्ट. हाँ, सही लग रहा है. अब हम एकदम से फ्लिप हो गए हैं क्योंकि अब हमें क्वेश्चन शुरू करने हैं. ठीक है, अब बहुत सीरियस बच्चे हैं हम. ओके, Cool. क्वेश्चन आंसर्स. Yeah. यस, मिस होस्ट, मिस भगा खान. Yeah, podcasting is amazing. Yeah, it feels great to be doing this. Now we start with the general questions. So the first one is, when do you think one does need a tarot reading done? Like वो कौन सा पॉइंट होता है कि मुझे शायद टैरो रीडिंग करानी पड़ेगी किसी इंसान के लिए, when they should get a tarot reading done. I think अब एज अ रीडर बताऊं तो फुल मून के आसपास करो. So another thing, हमें इस चैनल में बहुत ही लेमैन आंसर्स चाहिए. हमें फुल मून वगैरह मतलब नहीं आता लोगों को जनरली समझ.
So not many people had the knowledge around full moon. मगर सबको पता है, your viewers know, okay, don't underestimate them. Maybe तुम्हें नहीं पता है कि Yeah, go ahead. so okay, so I don't know, देखो उस तरफ से मैं if I am the receiver of a tarot reading or any astrology reading, मैं चाहूंगी जब मेरे पास specific question होता है, मुझे ये चीज समझनी है. I am a person who thinks in terms of all spiritual, emotional aspects, ठीक है. Usually work में भी जो growing, especially like coming up generation, I think क्या होता है ना, we are always flowering into this world as people, as person, our personality keeps flowering. So at some point we are looking for answers, and they can be answers जिसके बारे में we need like we need to know more about ourselves, we need to know more about life. तो कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि मुझे इस मैटर में इंसाइट चाहिए, साथ के साथ मुझे ये जानना है कि मैं अपने धर्म से, धर्म का मतलब कि फर्स्ट प्रिंसिपल कि जो आपका एक लाइफ का जो स्पिरिचुअल ब्लूप्रिंट है उससे अलाइन कैसे करूँ, हाउ आई कैन अलाइन माई लाइफ टू व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ. तो एक एक कॉमन क्वेश्चन लोग एस्ट्रोलॉजी में पूछते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ. आकाशिक में, एस्ट्रोलॉजी में, टैरो में लोग ये सब पूछते हैं. बाकी आपको टैरो रीडिंग इंसाइट्स के लिए, और वो रीडर पे भी बहुत डिपेंड करता है, यू समटाइम्स फील कनेक्टेड टू द रीडर एंड देन यू गो फॉर रीडिंग्स अगेन एंड अगेन. So काइंड ऑफ समराइजिंग कि आपने बोला कि अपने को तब करनी चाहिए व्हेन यू हैव अ स्पेसिफिक क्वेश्चन, राइट? एंड सेकंड, वन इज स्पेसिफिक क्वेश्चन एंड सेकंड व्हेन यू देखो ये तो तुमने भी देखा होगा ना कि लोग कब जाते हैं नौकरी लगाने के लिए, शादी कराने के लिए. तभी जाते हैं ना जो नॉर्मल ज्योतिषी है. लेकिन एक इंसान की कई बार वो इमोशनल और स्पिरिचुअल एक वो भी होती है ना कि एक अवेकनिंग होती है, उस टाइम उसको समझना होता है कि what I'm going through, it's like an assistance. And you know, हम सबके ancestors हमारे साथ होते हैं, वो हमारे साथ चलते हैं. तो कई बार मैं देखती हूँ कि लोगों के जो ancestors हैं, उनके guides हैं, उनके देवता हैं, वही उनको रीडिंग कराने के लिए ले आते हैं. वही उनको, they had messages and they want to convey it to you, they want to tell people कि तुम्हें ये काम करना है या ऐसे, जिसको वो मेरे लिए बहुत वो तब बिल्कुल करानी चाहिए. बट फिर वो वही है, वो प्रेरणा है भगवान की, you know, that is the grace. But then again, we are going round and round. The first is when you feel you have a specific question, Right. and second is when you have like a maybe an internal calling that you know someone needs to talk to you, sort of thing. You will know, I think You will know yourself. person can know for themselves that they need a reading. But if like they are anxious और उनको उनको समझ नहीं आ रहा है वो क्या करे, वो तब भी आ सकते हैं, right? Because as a not as a sister, as a person who is in her life from long time, I also feel कि जब भी मेरे पे डाउट्स होते हैं मेरे पास, I go for a tarot reading. तो क्योंकि वो मेरे पे खुद आ जाता है, बिकॉज शी इज माई सिस्टर, मे बी दैट्स वाई. लेकिन फॉर एनीवन एल्स अगर तुमको डाउट्स हैं तो आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग. Even if you're my sister, as a reader I just channel. And I, मेरे लिए कोई फर्क नहीं है कि मैं भव्या की रीडिंग कर रही हूँ या कोई मेरे पास जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो आते हैं. So it's not, it doesn't make a difference to me. I just channel for your energetic space and your akashic space, like, where you are at, and I try to put it in words, in expression, trying to tell you. And sometimes people have very like face to face conversation, you know, kind of questions they ask from a lot of you gets removed from a reading. So that's why Right. these things are channeling. So yeah, it's very beautiful experience. It's like I feel like what I'm describing right now is my experience as a tarot reader. What I experience when I go through channeling of your readings, and yeah. Great, great. Cool. We come on to our second question, which is how can I select my tarot reader? Yeah, ये काफी important है. How can one select their tarot reader? तो पहले तो you listen to the person, right? Like you listen to someone online. How you feel connected to the reader, I feel. You will at personal level, तुमको लगेगा. I'm sure you also you telling me you listen Yeah, to yeah, I one, listen to one. So She's, I have never seen her face, but it's her YouTube videos are just about the readings. Like she just shows the cards and it her hands and I don't even know her name. So it's crazy how you connect to a person. लेकिन अगर जैसे मुझे वो सेलेक्ट कैसे हुई, क्योंकि मैं उस बारे में ढूंढ रही थी, तो मुझे वो कनेक्ट हो गया.
तो अगर तुम्हें कैसे कनेक्ट कर like, तुम कैसे डिसाइड Okay. करोगे कि मुझे इस 10 इफ यू टाइप इंस्टाग्राम पे भी इफ यू टाइप अ टैरो रीडर यू गेट लाइक हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस Yeah, right, right. तो फिर तुम क्या बोलोगे कि हाउ डू यू सेलेक्ट See, it's like just pick a card reading में you connect with what is calling you. I think with a person, that energy feeling, तुम्हें उस इंसान के साथ you feel like this is a safe person. They don't have ulterior motives to be giving me readings. एंड ऑल्सो आई फील कि जैसे तुमने कहा ना कि मैंने भी जब स्टार्टिंग में आई यूज टू कनेक्ट विद टैरो कार्ड रीडर्स ऑनलाइन ऐसा भी होता है यू फॉल अपार्ट एंड देन यू रीड गेट रीडिंग फ्रॉम देम सम टाइम बट दोज आर जनरल रीडिंग्स पर्सनल रीडिंग्स में अगर आपको ये लगता है कि इस इंसान ने जो मुझे सोल्यूशन दिया that got me out of my problem, that liberated me from my problem, not like कि problem गायब हो गई but liberation from the problem. If the person is able to take you from delusion to liberation, I think that's a great reader. And I think नाइस that's how one can know कि how much they are able to um, like simplify the things for you and make you feel liberated. I'm sure people have felt like this. कई बार होता है somebody says something and we feel enlightened, we feel liberated. Those are our guides talking through that person. तो ऐसा नहीं है कि आप एक जगह जाके रीडिंग लेते हो. Life is like an oracle. You should be able to like उसको ब्रेक डाउन करके समझना आना नहीं चाहिए. लेकिन इसका एक फॉलो अप क्वेश्चन ये है कि शुड बी डिसाइड ऑन कि अगर इसकी ज्यादा फॉलोअर्स हैं तो ये ज्यादा अच्छी रीडिंग करती होगी मतलब अगर क्योंकि पर्सपेक्टिव वो रहता है पवे यार ये क्या पूछ लिया तू. यार लोग मतलब आए दिन एक्सपोज होते हैं, उनके अवार्ड्स मिल रहे होते हैं, उनको पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है उनके टैरो पेज पे एंड दे आर नॉट इवन लाइक रीडर्स लेजिटिमेट. या या And so there is a whole so in spiritual business groups it is you should not. हाँ मैं जानती हूँ लोग रेटिंग हम भी गूगल रेटिंग देख के पर आप यहाँ पे कपड़े नहीं खरीद रहे हो. यू आर आस्किंग फॉर अ सर्विस. आप सर्विस के लिए यूज योर माइंड. ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट दैट रीडर. जो भी आपका क्वेश्चन है उसके लिए यू डोंट रन एंड जस्ट ग्रास्प द आंसर. यू हैव टू हैव दैट कि सिंसियरिटी होनी चाहिए. सो मतलब हाँ फॉलोअर्स देख के रीडिंग मत कराओ भाई बिकॉज एज शी सेड कपड़े नहीं खरीद रहे दैट आई ऑल्सो फील समटाइम्स बिकॉज पीपल आर लाइक द वन आई लिसन टू माई आई नेवर हैड डन पर्सनल रीडिंग्स फ्रॉम हर जनरल रीडिंग्स ही मैं उसकी देखती हूँ लेकिन उसके फॉलोअर्स लिटरली 1000 भी नहीं थे बट आई स्टिल वॉच हूँ सो आई थिंक वो कनेक्शन देख देख के आता है कि तुम्हें किससे क्या आ रहा है एंड फॉलोअर्स डज नॉट मैटर उस सेंस में. Why are you smiling? Third most asked question, at least on my Instagram, is do tarot cards tell you the insights into the future, like of into the future. ओके सो इस बात को समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि फ्यूचर डिसाइड कैसे होता है किसी इंसान का. ओके ऐसा भी कहते हैं लोग कि जिसका पास नहीं उसका फ्यूचर नहीं होगा. कंट्रीज के बारे में लोग ऐसा कहते हैं. सो वी नीड सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी टू रन अ कंट्री. You need what is your identity. Understanding that clearly, you need to know your past to be able to understand your future. बाकी जो फ्यूचर डिसाइड होता है दो चीजों पे होता है. एक तो आपके पास कैसा है और दूसरा आपका अभी फ्री विल क्या है. आपके क्या वांट है, आपके क्या डिक्लेरेशन है, क्या डिसीजन है, क्या चीजों के बारे में आप डिसाइडेड हो कि मुझे ये चाहिए. तो कई बार विल डेस्टिनी के भी भारी पड़ जाती है. तो फ्यूचर में हमेशा ओपन एंड्स होते हैं. बहुत decided future, yes, I can channel that through tarot. And in some cases it's very decided, in some cases it depends on person's will, it depends on person's कि उसका क्या will persistence उसका कैसा है, उसका will power कैसा है. उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है क्या वो एलिमेंट ऐड कर सकता है अपने चाहे हुए फ्यूचर को पाने के लिए. Also in her readings you will also find solution like more than कि अच्छा तुम फ्यूचर में ये चाह रहे हो ये हो जाएगा इससे ज्यादा ये कैसे होगा इसका कोई एस्ट्रोलॉजिकल सोल्यूशन भी मिल सकता है उन रीडिंग्स में. मैंने यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगी भव्या कि मैंने ना दो तरीके के लोग एक्सपीरियंस किए हैं. एक जो सोल्यूशन में इंटरेस्टेड होते हैं चाहे वो लॉन्ग टर्म भी हो, और एक जिनको जल्दी से जल्दी आंसर चाहिए, उनको रेमेडीज के थ्रू आंसर चाहिए. और वो उनके लिए होता भी है. मैं ये नहीं कह रही कि आपको जिस तरीके का जैसा खाना आपको चाहिए वैसा बना लोगे ना किचन में जाके. अगर आपको मैगी ही खानी है इंस्टेंट तो आप कर लोगे. पीपल हु आर
just after solution, for them remedies are there, for them, you know, to quickly reach a point. But ऑब्वियसली हर इंसान को पीस ऑफ माइंड तो चाहिए, हर इंसान को एक दिमागी शांति, वो इनवेरिएबली सब एवरीबडी कैन रिसीव इट, no matter how desperate you are for your situation or how seeking like attitude you have, you know how much you are क्योंकि हाँ ये चीज है कि हर किसी को सोल्यूशन नहीं चाहिए होता, हर कभी कभी लोगों को रेमेडी चाहिए होती है, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट्स रॉन्ग, बट I'm not no one to judge people on that. It's their choice. Cool. Nice. Um, okay, we come to question fourth, right? How accurate is the reading and does it help in general life situations as well? Like how accurate is the tarot reading, I think comes from the last question only. कि वो सच होता है या नहीं होता है जो आप बताते हो, कितना accurate होता है, accuracy percent क्या है, and blah blah blah. So you are asking, can you like repeat the question? Like how accurate you think are the readings and does it help in general life situations? Does it help in general life situation? Yeah, it is a question about your general life situation and how accurate it is. ये तो आप decide करोगे ना. Like the one who is receiving reading, they can know how accurate this is. If I can tell कि भव्या तूने कल ये किया था, ये किया था, ये किया था, and you're like, right, 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 then you will believe कि अच्छा, अब अगर ये जो future में बताएगी वो ये सही बताएगी, probably उसकी right होने, correct होने के, accurate होने के chances ज़्यादा हैं. So, you know, I always, when I teach tarot, I have taken classes also, I tell people that, you know, don't try to predict the future of the person. First predict past. First know कि तुम्हें उसका past का information correct आ रहा है या नहीं. When the person confirms that yes, yes and yes, then go for the present and future. Like, you know, present has indication of future, and future, how you view future, again, self knowledge is above all. जितना reader को self knowledge होगा, you know, knowledge of how this universe is existing, how evolved they are in their spiritual path or in their dharma of being a psychic, of being a jyotish, उस पे भी डिपेंड करता है कि क्या कहते हैं कितनी एक्यूरेट रीडिंग आएंगी. सो इट्स वेरी लाइक मतलब कोई डेफिनेट आंसर नहीं कि कितनी एक्यूरेसी परसेंटेज है, बिकॉज इट्स नॉट मेजरेबल, राइट? it is measurable. I'm not saying it's not measurable, but it's more of a feeling than it's more of In an numbers. experience. That's why these are called occult sciences. Now there is something hidden about them. कुछ रहस्यमयी, कुछ mysteriousness हमेशा होगी. आपको पता है वो आपके लिए वर्क कर रहा है या नहीं. Nobody can answer you about it. Makes sense. Cool. We come to the fifth one, which is ये भी बहुत ज्यादा पूछे जाता है. How is tarot connected to the zodiac signs? And also जो YouTube पे इतनी सारी वीडियोस होती है ना कि कैप्रिकॉर्न की है, कैंसर की है, तो वो सारी वीडियोस जेनेरिक रीडिंग्स होती है लेकिन टैरो रीडिंग्स होती है. तो ये टैरो और ज़ोडिएक कैसे कनेक्टेड है? पूरा मैच है. आपके जितने कार्ड्स होते हैं उसमें आपके 21 मेजर कार्ना रहते हैं और फिर 10 और +4, ये सारे नंबर का सिग्निफिकेंस है. ये आपके मंथ्स, ऋतु और इन सब चीज़ों से कनेक्टेड है. सेम एस्ट्रोलॉजी का गणित है. एस्ट्रोलॉजी नहीं, ज्योतिषी का गणित. ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी सेम तो हुआ. न्यूमेरोलॉजी, ये सब इसमें मिक्स हो जाता है. कलर, अंडरस्टैंडिंग सिंबोलिज्म. तो टैरो और एस्ट्रोलॉजी, अब उसमें भी हम आर्केटाइप समझते हैं एस्ट्रोलॉजी में भी कि सूर्य क्या है. पर ज्योतिषी का एक ये है कि ज्योतिषी का शास्त्रीय प्रमाण है. सो ज्योतिषी के बारे में इंफॉर्मेशन, वैदिक एस्ट्रोलॉजी जिसको हम कहते हैं, ज्योतिषी जो आज के टाइम में होती है, हाँ तांत्रिक भी होती है, आयुर्वेदिक भी होती है, बहुत सारी हेल्थ से रिलेटेड. ज्योतिषी का तो एक्सपेंशन बहुत है. अगर हम वेदांग की बात करें तो उसमें ज्योतिषी, वेदांग में उसके आइज माना गया है. ज्योति जो है ना कि लाइक द लाइट एलिमेंट. सो यू कैन, जहाँ पे भी मेरी लाइफ की किन गलियों में अंधेरा है, देयर इट हेल्प्स यू फाइंड लाइट. ज्योतिषी ऐसे आपके लाइफ में आपको हेल्प कर सकता है. और टैरो क्या है? टैरो इज लाइक, आप ऐसे समझ सकते हो, ज्योतिषी का एक पार्ट होती है प्रश्न कुंडली. ओके, प्रश्न कुंडली में आप मुझसे अभी क्वेश्चन पूछते हो, अभी मैं आपकी कुंडली बना के आंसर देती हूँ. टैरो इज लाइक दैट. अभी के अभी आपकी करंट सिचुएशन एनर्जी का मैं एक स्प्रेड निकालूंगी और उसमें बताऊंगी. तो वो आपके साथ अभी आप जहाँ हो, टैरो इज दैट वन पॉइंट हेयर.
now here. Jyotishi has information a lot on your everything and everything. You have to see ज्योतिषी जब आप पढ़ते हो कि एक चीज से सन से आप इंसान के फादर, उनकी आत्मा, उनका वर्क, उनका इज्जत समाज, क्या क्या नहीं आप जज कर सकते हो. एंड टैरो में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं. सो इट्स लाइक दोनों बताते हैं आपको आपकी लाइफ के बारे में ही हैं, लेकिन अलग अलग उनके मेथड्स हैं, अलग टाइप्स, डिफिनेशन जो है अलग अलग है. हाउ टू डिराइव व्हाट यू वांट फ्रॉम इट इज But I think a science. we diverted from क्या? zodiac and tarot to tarot and astrology. Sorry Because यार. tarot and astrology is our is going to be our question anyway, so we can answer that as well. Because one of our question was, we will mark it as sixth now, that how is tarot and astrology related to each other. So first was zodiac, which I think we answered. Now you were already telling about tarot and astrology, so you can continue. तुमने ये पूछा था ना कि ऑनलाइन जो रीडिंग्स मिलती हैं वो जनरल होती हैं, है ना. सो हाउ टू लाइक अंडरस्टैंड दैट. जो ऑनलाइन आपकी रीडिंग्स है ना, दे आर अगेन जैसे मैंने बोला कि टैरो क्या है कि आप अभी के अभी जो है कुंडली एनर्जी ब्लूप्रिंट निकालोगे, तो वही हो कैप्रिकॉर्न का उस टाइम पे जब भी आप व्यू कर रहे हो इन वॉट एवर टाइम लाइन यू आर मीटिंग, उस टाइम पे आपकी क्या एनर्जी है, दैट्स वॉट that video is containing. It a lot of it, see this is like all Rahu energy. There is a delusion. You have to find which reading is for me. क्योंकि यहाँ पे ना एक बहुत एक की है, कई बार लोग टैरो रीडिंग में फंस के रह जाते हैं. वो क्लैरिटी की तरफ नहीं जाते, वो हर छोटी बात के लिए टैरो के पीछे भागते हैं. और in they are like very susceptible to wrong kind of readers also who might exploit you. I don't know anybody like that, but you know world is full of people. So जो लोग बहुत ज़्यादा astrology के पीछे भागते हैं almost to the point of superstition, I think that's ruining your life, and one should avoid doing that. Do not rush to these things for like a utility thing. Again, यहाँ पे इसका instant मैगी होना अच्छी बात नहीं है. Do not make it. It's not healthy to do it again and again. Okay. So like have a healthy relation with your psychic readings. They are not like a you know tool to spiritual bypass. They are not a you have to go through your suffering. You have to go through your life. So, whatever readings are online available, use your discernment in them. Use your discernment. You connect with the reader and they are giving you every month reading. Great. You enjoy it. You like to know what you like to know. Some journal readings में discernment use करो. जो चीज़ तुम्हारे लिए नहीं है, जो चीज़ fit नहीं हो रही, drop it. Use it. वो online पड़ी हुई एक ऐसी वीडियो है जिसको आपको you have to use it as a toolkit. वो tools आपको present करेगी. You have to use it. It cannot be the correct answer or 1000%. It's called general reading for a reason. So don't, yeah, they are not, they're just entertainment value. Okay, लोग इस पर डिबेट करते हैं कि हॉरोस्कोप रियल होता है जो पेपर में निकलता है या नहीं है, और obviously it's just a small thing. Is every news on that paper exactly what happened? No, right? So it that why will the zodiac section be 1000% true? So use your discernment. How is astrology and tarot related to one another? Because in tarot there is all these Venus, Sun, and blah 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 that we listen. Like I listen to them in a reading. I'm sure most of you as well. So that's why since you already discussed that part, you already mentioned how they're related, but I think we didn't finish that. So if we could do Okay, that. so when I'm making a tarot reading and when I say you go check your sun, moon, Venus and other personal placements, so सबकी चार्ट में 9 planets हैं, सबके वो 9 के 9 planets कहीं बैठे हुए हैं, उनका जो ट्रांजिट आता है तो वो अलग अलग रिजल्ट देते हैं, वो planets अलग अलग राशियों में ट्रैवल कर रहे हैं, और मैं रीडिंग बना रही हूँ. आई एम मेकिंग अ रीडिंग फॉर द राशि, फॉर एरीज राशि. तो अगर आपका मून एरीज में है लेकिन किसी और का सन एरीज में है, तो जो सन की जो ट्रांजिट है उस हिसाब से उसको वो रीडिंग रेजोनेट करेगी. ठीक है. और जो जैसे सन साइन हो गया, असेंडेंट साइन हो गया, मून साइन हो गया, वीनस हो गया. वीनस इज अबाउट लव, मून इज अबाउट मन, आपका हृदय कहाँ जा रहा है, एंड असेंडेंट इज अबाउट यू योर सेल्फ, एंड सन इज अबाउट कि आप सन इज यू एज अ पर्सोना, दैट्स योर सन साइन.
सो उन वेज के थ्रू कि अब आपको पता लग गया कि मून साइन का क्या सिग्निफिकेंस है, उस बेसिस पे आप अपनी मून एरीज मून की रीडिंग चेक करोगे. So sometimes, let's say you have a moon in Aries and you have a sun in Leo. It it can happen. Uh, but आपको उस टाइम पे एरीज की भी रेजोनेट कर गई और फिर लियो की भी रेजोनेट कर गई, क्योंकि आपको इस लाइफ में दोनों सिचुएशन हो रही होंगी. हम तो मैंने 7 मिनट की वीडियो बना के, आई एम नॉट गिविंग यू अ 1.5 hour रीडिंग ऑन वन टॉपिक. सो लाइक ये इट कैन रेजोनेट. यू जस्ट हैव टू फाइंड कि आप किस प्लैनेट के दशा में हो. जिस भी प्लैनेट की दशा होगी वो वहां पे भी वो जो राशि है वो आपके लिए रेजोनेट करेगी. ठीक है. कहाँ थी मैं? टैरो के थ्रू तुमको दोनों रीडिंग मिल सकती है, ज़ोडिएक भी एस्ट्रोलॉजिकल भी, या फिर एस्ट्रोलॉजिकल के लिए अपने को दूसरी रीडिंग चाहिए? मैं पर्सनल रीडिंग के पूछ रहा हूँ. हाँ. पर्सनल रीडिंग में ये है कि अगर आपको टाइमिंग का क्वेश्चन है, आपको पता है मेरी 7:30 ही चल रही है, तो भाई आप एस्ट्रोलॉजी रीडिंग एस्ट्रोलॉजी करा लो. यही था मेरा क्वेश्चन कि कौन से टाइम पे फिर मैं टैरो रीडिंग कराऊँ या कौन से टाइम पे मैं एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कराऊँ. जब आपको टाइमिंग जानना है कि इस किस टाइम में मेरा कब होगा और मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, उस टाइप के लिए आपको एस्ट्रोलॉजी करानी चाहिए. फॉर मोर इन डेप्थ क्वेश्चन, मोर टाइमिंग बेस्ड क्वेश्चन, tarot is more of insight on your current situation. We come to the seventh question, the second last question here, which is when a person asks, yes or no questions. How often how often should he ask that, and how better it is or worse it is? Like उसका वो क्या है? Yes or no questions करने चाहिए या फिर डिटेल रीडिंग ही चाहिए हमेशा? नहीं करनी चाहिए. yes or no करने चाहिए. मैं ये आप yes or no का सिंपल क्वेश्चन बताती हूँ. मेरे को 2 जगह से ऑफर आ रखे हैं, कौन सी जॉब लूँ. yes or no में बहुत क्लियर आंसर आएंगे. वॉइस नोट में भी बहुत क्लियर आंसर है. वॉइस मतलब छोटी से छोटी रीडिंग्स आर आल्सो लाइक दोस क्रिस्प रीडिंग आल्सो वर्क. दे आर देयर फॉर अ रीजन. And full talk, full discussion on your whole thing, you need them once in a while, I guess. ठीक है. We come to our last question, which is eighth. How does this, now this is not related to tarot specifically, this is just spiritual based questions, more like how do we select the right stones in our life, and how, like what I is the love this significance question. of this stone? What is the signification of stones in our life? Stones, अब आप देखो, they are built, लावा फट जाता है भाई, volcanic eruption होता है. You know, volcano energy is worshipped as देवी छिन्नमस्ता also. देवी छिन्नमस्ता हमारी मतलब बहुत बड़ी देवी है, कई कुलों में उनकी पूजा होती है. So volcanic energy is that eruption of the nature. उसके बाद कई सालों तक वो rocks बनते रहते हैं, they are powerhouse of information. And they are, and we as humans, we also have those, हम अर्थ से we have frequencies matching, so we are also powerhouse of information. Now when you want to align your will to a certain outcome or to achieve something specific in life, and you find out through this planet I can do it, and you align your energy with the stone of that planet. It takes will. आपको पता होना चाहिए. मम्मी ने लाके दे दिया, मत पहनो. पता करो कि मैं किस इंटेंशन से इसे पहन रहा हूँ. Get your intention aligned with what stone you are carrying, you're wearing, and it can change your life. Stones और astrological remedies से 3 दिन में लोगों को रिजल्ट्स आते हुए देखे हैं मैंने. लेकिन वही क्वेश्चन था ना कि ये जो स्टोन्स हैं, हाउ डू वी सेलेक्ट कि अपने लिए राइट कौन सा, ये कहाँ जाके सेलेक्ट करें, किससे पूछें, कैसे पता लगेगा, मेन ये है ना अपना. एस्ट्रोलॉजर कैन टेल यू विच स्टोन इज, कौन सा स्टोन आपकी या किस टाइप के स्टोन्स, क्योंकि हर एक प्लैनेट के अपने स्टोन होते हैं. हाँ. अब लेट्स से किसी का प्लैनेट, सर्टेन प्लैनेट इज गोइंग टू कॉज एक्सीडेंट इन दैट पर्सन्स लाइफ, और वो उस प्लैनेट का स्टोन पहन ले. हो सकता है उसको उससे कनेक्टेड फील हुआ ना, किसी एक्सीडेंट के बाद उसको उसका रिजल्ट मिल जाए, पर वी डोंट वांट टू कॉज दैट, राइट? So you have to like find out right information about the stone also, and how which आपके astrology का क्या energy है और क्या correct आपको alignment, किस तरीके आपको protection चाहिए, आपको certain way में energy चाहिए, क्या आपको चाहिए, and उस हिसाब से उस दिन पर stone को charge करके deity से connect करके तब आप उसको धारण करो. So jewelry of stone also can bring you a lot of results, and I think one should wear it with whole heart and
definitely connect your will, your wants, your desires, and even more like your intention with it, and sit with it. It's like more personal connection you have with it, the better results you can make happen. You know, एक है कि पूजा ऐसे ही जाके कर रहे हैं और एक की पता है कि why we are Why we are doing doing it. it. I think yes, that's the end of all the questions. I hope you enjoyed. We hope you enjoyed. Thank you so much for No, tuning I was in. asking. I hope you enjoyed the podcast. Oh, मैं तो पहले से excited. I was so excited about recording with Bhavya. She gives so much space to talk, man. Thank you so Thanks. much. Okay, let's pull a card for the readers who are watching this, who जो अभी तक इस वीडियो में बैठे हैं, आपके लिए एक कार्ड निकालते हैं. What is the general energy on all of you? Let's find out. Yes, that is cool. And one message for all of you. Let's see what energy you guys are at. By the way, these are so beautiful. Yes. Okay, let's see. What is the message for people watching this who have blessed us with their listening space? Let's see. What is the message for all of you? Thank you all for joining us here. Let's see what one message for all of you. Okay. Queen of Pentacles, Ten of Cups, Nine of Pentacles, Nine of Swords, and the Lovers. Okay, okay. This is like Three of Wands. I feel a lot of you, you want some kind of breakthrough. Okay, you guys want some kind of breakthrough in. You're going through a transformation. I don't know how many people are listening to this, but right now, what I'm catching up on is you're going through a transformation. Threshold energy is there. You are going to make a breakthrough in it also. There will be a good news right now happening. There is some आपको कुछ अभी click मिला है, कुछ आपको understanding मिली है, how to apply your knowledge, how to be happy, how to come to a place where you can drop needing someone is what I'm getting. So somewhere maybe this uh, right now you're this helped you to understand that you are enough by yourself and you have enough energy to share with the world. You have enough energy to enrich others. Maybe you should if this video clicked with you, maybe you should share it with somebody who you think will benefit from this. But you are ready to share, you're ready to enrich, you're ready to move forward. कोई ना click is definitely there, guys. There is some click for you guys, and you will what आपने ना पहले ऐसे सोचा होगा कि no, I'm just this kind of person only, but suddenly you're having this harmonious understanding and friendship with yourself, and you will enjoy your own company. You will start enjoying your own company. Will come out of this time of feeling anxious or something. And some of you can give out energy in terms of physical energy also, like you go and physically maybe lighten up yourself, dance or something like that, feel good about yourself. So this is time to show yourself some love. And yeah, there is some how to say incest, like angelic blessing in this card. So I'm seeing that as you know, crown chakra awakening. And if I have to explain it, it is like you you're ready to receive, you are feeling grateful, or you will be feeling grateful about the life that you have. This is what I see. Some money can be coming towards you with the Nine of Pentacles. So overall, this looks like you guys are creating a breakthrough in your life, and you guys are moving towards a time of accepting yourself. So self acceptance is high on this reading. And yeah, there is some hurt, there is something that you're getting over. But because you have chosen this direction, because you have chosen this harmony, because you have chosen this place of being friends with yourself, it is going to benefit you. It is going to make you feel okay by yourself. You will realize that you have a garden and you have other friends, maybe not that one friend, but you have your people and you're fine. So अगर blessing ऐसे नहीं आ रही है तो through something else it will happen, and it is happening because you accepted some kind of reality, some suffering, something that you are going through. You have completely accepted it, and that has opened your heart to new possibilities. Nice. Good reading.
Cool. I We hope will. this resonates. Thank you so much for tuning in. Done. Bye bye.